So my demo session, it looks like this. यूजली क्या होता है कि व्हेन यू आर अंडर प्रेशर या इंटरव्यूज़ में, डेमो सेशंस में, यू फंबल अ लॉट एंड यू फॉरगेट थिंग्स. तो उस चीज़ से बचने के लिए या उस गैप, वो जो एक ऑकवर्ड सा गैप आ जाता है बीच में, उसको अवॉइड करने के लिए आई राइट ईच एंड एवरी थिंग ड्यूरिंग द फ्लो. अगर आप कुछ भूल भी जाएं, सो यू कैन जस्ट फ्लिप द पेज एंड यू कैन जस्ट सी कि अच्छा आप कौन से पॉइंट पे थे एंड आपने आगे कहाँ से कंटिन्यू करना है. स्मूथ और ईजी आपका सेशन हो जाता है इस तरह. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द फॉर्मल डेमो सेशन. अच्छा, कुछ चीज़ें मैं क्लियर कर दूं कि डेमो सेशन इज़ नॉट अ लेक्चर. ठीक है, जब आप एक क्लास में लेक्चर दे रहे होते हैं, डेमो सेशन इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम दैट. डेमो सेशन बेसिकली टीचर्स के लिए लिया इसलिए जाता है जस्ट टू सी दैट हाउ दे कम्युनिकेट, हाउ दे स्पीक, उनका डिलीवरी स्टाइल कैसा है, कमांड कैसी है, जिस उसके सब्जेक्ट के लिए वो आए हैं, आइदर इट्स इंग्लिश और मैथ, साइंस, व्हाटएवर. तो उसको टीचर को जो है, जो फॉलोइंग टीचर है, ग्रिप कितनी अच्छी है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट एंड पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर. ठीक है, तो डेमो सेशंस में आपने बहुत डीपली इनटू द टॉपिक नहीं जाना होता. इट्स वेरी जेनेरिक एंड इट शुड बी जेनेरिक, टाइम सेविंग बट वेरी पावरफुल. ठीक है, मेरा जो बेसिकली जिस स्कूल में मैं अप्लाई कर रही हूँ, उन्होंने मुझे पहले ख़ुद से ही कहा था कि वी आर लुकिंग फॉर इंग्लिश इंस्ट्रक्टर्स या इंग्लिश टीचर्स. ग्रेड्स उन्होंने मुझे बता दिए थे, इट वुड बी 3, 4, 5 एंड 6. टॉपिक मैंने खुद चूज़ किया है. कुछ स्कूल्स आपको टॉपिक खुद देते हैं, बट यहाँ पे उन्होंने चॉइस दी थी, सो आई चोज़ क्रिएटिव राइटिंग. ठीक है, सबसे पहले डेमो सेशन भी स्टार्ट होने से पहले यू आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, कि आप कौन हैं, व्हाट इज़ योर नेम, आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, एंड आप कौन सा सब्जेक्ट एंड कौन सा टॉपिक आज पढ़ाने आए हैं या डेमो सेशन देने आए हैं. That is your introduction, and after your introduction you are straight going to jump into the topics introduction. So my introduction would be, today we are going to discuss one of the most important skills in English writing, and that is creative writing. So you need to say things in a very firm way, कि मतलब आप बहुत casually चीज़ें नहीं बोल सकते. For example, if I say, so today we are going to discuss one of the most important skills in English writing, and that is creative writing. It's a very casual and clumsy way. जिसने आपकी बात सुननी भी होगी वो भी इंटरेस्टेड नहीं होगा टू फॉलो विद यू या आपकी लीड के साथ चलें. अगर आप वही चीज़ एक पावरफुल वॉइस, फोकस्ड वॉइस, फर्म वॉइस के साथ चलेंगे, सो हो सकता है दैट पीपल आर इंटरेस्टेड और स्टूडेंट्स माइट बी इंटरेस्टेड इन व्हाट यू आर सेइंग और इन व्हाट यू आर टेलिंग देम. It is not just about writing sentences, rather it is about using your imagination, your ideas and thoughts to create something new and interesting. अब न्यू और इंटरेस्टिंग के ऊपर मैंने डबल इसलिए किया है बिकॉज व्हेन आई विल राइट ऑन बोर्ड, तो तब भी मैंने इन दो चीज़ों को फोकस करना है, न्यू और इंटरेस्टिंग को. वाई? बिकॉज क्रिएटिव राइटिंग इज़ ऑल अबाउट दिस, कि हाउ यू इमेजिन एंड हाउ यू राइट बोरिंग थिंग्स और कन्वर्ट, ट्रांसफॉर्म बोरिंग थिंग्स इनटू समथिंग इंटरेस्टिंग. ठीक हो गया? कम्युनिकेशन, इमेजिनेशन एंड राइटिंग. That means imagination means your creative skill. So communication, imagination and writing, they go side by side. अब इसको आप थोड़ा चाहें तो elaborate भी कर सकते हैं that whenever you go outside of the school भी, even colleges, universities, professional life में भी, whenever you write, it doesn't comes with just कि आपने बस sentences लिखने हैं. It always come with your communication, कि आपकी communication कैसी है. Either it's verbal, non-verbal, then imagination means your creative skill. Sentences तो कोई भी लिख सकता है, बट उसको एक प्रोफेशनल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना, क्रिएटिव फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना, कैजुअल, फॉर्मल, इनफॉर्मल में ट्रांसफॉर्म करना, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं. और ये सब
एक कोलैबोरेशन में काम करते हैं, तो सो दे गो पैरेलल, दे गो साइड बाय साइड. सही. सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, व्हाट इज क्रिएटिव राइटिंग? सबसे पहले आपने उस चीज़ को एक्सप्लेन करना है बिफोर जंपिंग इनटू एग्जांपल्स एंड कंक्लूजन्स कि वो चीज़ है क्या. सो व्हाट इज एक्चुअली क्रिएटिव राइटिंग? Writing your own ideas in an interesting, catchy and imaginative way. Now, creative writing can be a story in a form of story, paragraph forms or short description forms. सही. टाइप्स हैं ये क्रिएटिव राइटिंग को आप किस किस फॉर्म में लिख सकते हैं. इन what ways or in what forms you can write creative writing? So these are 3 ways: story form, paragraph form and short description form. So now we already discussed that what is creative writing, but how to write it, what is the process, how to start the process, or what important steps are involved in creative writing. So step number 1, the most important, is thinking process that leads to your idea generation process. Thinking means soch. So whatever the topic is, you need to think about the topic first. You cannot just randomly jump into writing sentences. For example, the topic is a dream pet. Okay? So pet over here is the main character. So what we need to think? We need to think about the main character, which is pet. Right? We think about what we want to write. So we want to write about a dream pet, means pet. So we will think about pet. What kind of pet we want to write about? Are we interested in pets? What sort of pets are we interested in? This is all the thinking process and idea generation process that we need to do. Step number 2. One of the most important steps in writing, it is just not about creative writing. This step is usually, although thinking is used in everything, in every subject, in every learning, of course, but mind mapping is something that we use in every writing. It helps you in building your ideas, generating your ideas, and then organizing your ideas. It's more like a word association game. Means association, words that are correlated and that are associated, linked with each other. Okay. So how we do mind mapping? For example, the topic was a dream pet. So the topic was a dream pet. So we wrote dream pet. Now, what what are the bullet points? That is the right word. What are the bullet points that we need to cover? So we will start writing those points. For example, pet was the main character, right? So what will be the name of the pet? And what sort of pet is it? Either it's a cat, it's a dog, it's a bird. What will be its name? What will be the color? The powers, of course, it's a dream pet, means it can have magical powers, right? So what powers would the pet have? What's the breed? What's the type? Where the pet lives? So these all are the bullet points that we need to cover. Now coming towards step number 3, and that is making sentences. Means we have to start writing the draft. Take each point, that the bullet points which we wrote in the mind mapping, take each point and convert it in sentences. And of course, sentences are just not about, for example, if I say that we took name, the bullet we have taken is name. So my pet name is Sasha. That's not it. You need to elaborate. Example, my cat is furry and she has some big eyes and she looks like a fairy to me, and whenever she sees me, it feels like a friend, a close friend of mine is looking at me. So whenever I look at her, only one name pops up in my mind, and that is Sasha, because it's cute, it's friendly.
So that's why I named her Sasha, my friend or my pal or my dream pet, whatever. So you need to elaborate the bullet point. You can associate or you can not associate, but you can support your sentence with some examples or with some relevant adjectives. Okay. Now, step number 4 is arrange your ideas. By arranging my ideas or arranging your ideas is ascending to descending order. So in math we used to learn about ascending and descending order. Chote se bada, right? So chote se bada, that is a pyramid, and we are going to go with introduction, then description, and then ending, means conclusion. And that is your perfect order, right? And in every writing you need to go with this order. Last and the final step is final look or final review. Everything you write, everything you do, you need to finalize by just overlooking everything. क्या सब चीज़ें on point हैं? Either there is any spelling mistake, vocabulary mistake, grammatic mistake. It can be anything, right? So you need to give a final review or a final read to anything you write. And that's it. Your demo session is ready. All the best.